Okay, starting from the pointing devices. What are the pointing devices? हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो कवर अप कर लिया था, we have covered till our keyboards. कीबोर्ड आपके पास कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं that are using the typing methodology. ऐसे pointing device, sorry, ऐसे इनपुट डिवाइसेस जो आपके टाइपिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास जो है वो कहलाएंगी टाइपिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास क्या है? कीबोर्ड से. नाउ कमिंग टुवर्ड द पॉइंटिंग डिवाइसेस, व्हाट आर द पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज्ड फॉर? Pointing devices are something type of the devices that are used to click or used to point at a particular place on your screen. किसी भी स्क्रीन के ऊपर एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आपके पास क्लिक करने के लिए आपके पास जो है पॉइंट आउट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल हो रही है, वो आपके पास क्या चीज होती है, उसको आप पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं. नाउ दिस पॉइंटिंग डिवाइसेस में इंक्लूड द ट्रैक बॉल्स एज वेल. इसके अंदर आपके पास क्या होता है? पहले इसके अंदर एक नीचे बॉल आती थी, सरफेस बॉल निकल आती थी, जिसके जो आपका रोटेट करती थी आपकी सरफेस के ऊपर. अब इसकी जगह पे आप लोगों के पास क्या आ रही है? एलईडीज आ रही है. नाउ वी आर यूटिलाइजिंग एलईडीज ओवर है. ठीक है, ये आपके पास अगेन एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मूव करता है, डज नॉट मूव ऑन द जेड एक्सिस. सिमिलर गोस फॉर द ट्रैक बॉल्स. यहाँ पे आपके पास क्या चीज होती है? आपके पास लेस स्पेस कंज्यूम कर रही होती है, आरएसआई आपके पास रिमूव कर देती है, आरएसआई आपका काम होता है. सिंपल से एक ट्रैक बॉल है, यू कैन जस्ट मूव योर कर्सर फ्रॉम हियर टू देयर एंड देयर टू हियर, सिंपल एज दैट. Coming towards the microphones, now microphones are the type of the input devices that are utilized or that are used to provide data or information to your system with the help of the voice. दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है आपके पास, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड दूसरा आपके पास क्या है? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन. स्पीच और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के अंदर बहुत माइनर सा फर्क होता है. दो चीजें और होती हैं इसके अंदर जिसके लिए इस्तेमाल होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीच सिंथेसिस. स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीच सिंथेसिस. रिकॉग्नाइजेशन के अंदर आपके पास क्या चीज हो रही है? रिकॉग्नाइजेशन के अंदर सिंपली आपकी आवाज को मैच किया जाएगा, जबकि सिंथेसिस के अंदर आपके पास फ्रेज को मैच किया जाता है. फॉर एग्जांपल, ये आपकी initial voice है. Now when you're going to say that similar thing again, ये आपके पास again इसी तरह से आपका मूवमेंट होनी चाहिए. अगर इसको ओवरलैप नहीं किया, ये आपके पास स्पीच रिकॉग्नाइज नहीं करेगी. जबकि स्पीच सिंथेसिस के अंदर आपके पास क्या होता है? वो एक फ्रेज ले लेता है, आप 3 से 4 दफा उसी तरह का फ्रेज दोबारा कहते हैं, एंड देन इट इज गोइंग टू मैच द साउंड ऑफ द पर्टिकुलर लेटर्स अगेन एंड अगेन. और अगर वो फ्रेज आपका मैच कर रहा होता है, वो साउंड आपके पास मैच कर रही होती है, तो वो आगे मूव ऑन कर रहा होता है. ठीक है. Now moving ahead with the touch screens. Touch screens at the meantime आपके पास input devices भी होते हैं और output devices भी होते हैं, but when it comes to the O levels, so O levels के अंदर they are mainly known as the input devices. हमने इसको इस तरह से कैटेगराइज किया है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है. Now when it comes to the touch screen, there are 3 types of the touch screen that are known as the capacitive, infrared, and resistive. Question भाई. Now, what are the capacitive touch screens? Capacitive is something. Point number 1. वो बोलते हैं आपके पास this is made of many layers of glass that acts like a capacitor, creating electric fields between the glass plates in layers. Capacitor क्या होता है? करता क्या है वो? किसको कंट्रोल करता है? हाँ भाई. Okay. Now here you go. There are multiple layers, और multiple layers के अंदर आपका charges storage. Capacitor is the type of the device that is used to store charges. क्या चीज store करता है वो आपके पास? Charges के अंदर वो store कर रहा होता है. Is that clear? Now as soon as you are going to point at the top, तो onboard microprocessor that is known as your CPU वो determine करता है that where have you tapped. For example, just imagine that you have tapped over this place. Now it will let you know the coordinates of the x-axis and the y-axis, that what are the coordinates of the x-axis and what are the coordinates of the y-axis, और उसने किस तरह से आपके पास या किस लोकेशन के ऊपर उसने आपको टैप किया है. Moving ahead,
यही बात उन्होंने लिखी है. When the top glass layer is touched, the electric current changes, and the coordinates where the screen was touched is determined by an onboard microprocessor. Now, obviously, everything has some kind of the benefits and some kind of the drawbacks. So there are a few of the benefits over here for this. Number one, they say it is a medium cost technology. Medium cost means that it is not too much expensive and as well as not too much cheap. Screen visibility is good even in strong sunlight. क्या आपके पास screen visibility क्या है? Good है. Like for example, normally आप इसको देख सकते हैं strong sunlight के अंदर. It permits multi-touch capability. That means you can easily play games on this. आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर easily games को play कर सकते हैं. The screen is very durable. It takes a major impact to break the glass. Major impact का मतलब क्या है आपके पास बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं टूटेगा. It will take some time to break it out. Drawbacks. Number one, allows only the use of the bare fingers as a form of the input, although the latest screen permits a special stylus to be used. What do you mean by that? Bare fingers means that it should be not with a glove, it should be not with any kind of the thing. सिर्फ और सिर्फ आपकी जो naked fingers होती है वो आपके bare fingers कहलाएंगी. And they are saying yeah, some kind of the capacitive touch screen do allow with the stylus as well. Stylus is something जब pens और you may say जो आपके पास उसके अंदर एक पॉइंटर जो साथ में आता है, खासतौर पे सैमसंग के सेल फोन्स वगैरह के अंदर ज्यादातर आ रहा होता है. क्लियर? Moving towards the infrared. Now, infrared is of two types: heat and optical. First point for both are same. Uses glass as the screen material. They are using glass as the screen material. Okay? जो आपकी टॉप लेयर है वो आपके पास किस चीज की है? ग्लास की है. Now, needs a warm object, example fingers, to carry out an input operation. Heat के अंदर क्या बात? Heat means why they are saying with the fingers? The reason is that कि आपका जो temperature है आपकी screen का, that will be the temperature of your room temperature. Whatever the room temperature is, वो आपके पास same temperature. But when it comes to the fingers के temperature will be more than the room temperature. क्या होगा आपके पास ज़्यादा होगा जिससे room temperature से, so obviously it can work. हाँ, लेकिन अगर आपके screen का temperature बढ़ गया, then your fingers, so obviously it won't work. Then it comes with the optical. Optical says uses glass as a screen material. Uses an array of sensors in the form of the grid. The point of contact is based on which grid coordinate is touched. Now what do you mean by that? सर को दे दो. Okay. Now you may see the grids over here. Array means कि आपके पास constantly line by line आपके पास या one after the other एक जैसी चीज रखी है. One after the other कोई भी एक जैसी चीज रखी है. Now they are saying the sensors are placed over here. One after the other sensors are placed over here. 1, 2, 3, 4. Grid means आपके पास ये इस तरह Excel का एक box बन रहा है. Now for example, I have tapped over here. Now this is column number C and row number 2. So the onboard microprocessor is going to determine that you have tapped at C2. You have tapped at C2. Now let's say there are a few of the benefits. Capacitive में भी यही है, no doubt. But यहाँ पे आपके पास one after the other arrays utilize हो रहे हैं. Capacitive में आपके पास क्या है? Charges हैं. Charges react करेंगे. वहाँ पे array of sensors लगा हुआ है. Sensor touch sensors लगे हैं. जिस सेंसर को टच करोगी वही सेंसर आपके पास काम करेगा. यहाँ पे क्या हुआ है? Charges react करेंगे. Coordinates वाली बात same है. X और Y के coordinates जो निकलेंगे वो same है. लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी. वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है ऑप्टिकल. every बात इसमें सेंसर नहीं, उसमें सिर्फ सेंसर. Okay. Now the benefits. Both systems allow multi-touch capabilities. Okay, good enough for gaming purpose.
The optical system allows the use of the bare fingers, glove fingers और stylus for the input. सिर्फ optical allow कर रहा है आपके पास, heat allow नहीं कर रहा है. Why? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है? Stylus का या फिर glove का जो आपका temperature है that will be the same as the room temperature, तो आपके पास heat नहीं होगा. ठीक है? Then both systems have good screen durability. It takes a major impact to break the glass. आपके पास screen durability अच्छी है. It will take a time to break the glass. It cannot break that easily. Clear? Now, obviously, drawbacks. It is relatively expensive technology. Now, it is expensive. It's not cheap. It's not medium. It's expensive. Heat sensitive system only allows bare fingers to be used for the input. Glove finger or stylus don't work. Why are they not working? Because they are having the same temperature as the room temperature, as we discussed earlier. Both systems, optical and the heat sensitive, have fairly good screen visibility in strong sunlight. Okay, they're not too good, but not too bad as well. Coming to the last part, resistive. This makes use of an upper layer of polyester. Now, what do you mean by that? Now, there are two layers over here. Okay. Now the upper layer is of polyester. Polyester is a type of a plastic. You guys might have seen the Nokia cell phone that were having the typing pads. 1100 या आपके पास 3310 these type of things. उसके ऊपर directly screen नहीं होता था, आपका top layer polyester ही होता. The bottom layer is of glass. Bottom layer is of glass, upper layer is of polyester. When the top polyester layer is touched, the top layer and the bottom layer complete a circuit. Now you guys might have seen a type of a circuit when you are in your schools. Now this was the switch. This part was the switch. This was the bulb. Have you guys ever seen that? देखो, ठीक है. जैसे ये स्विच आपके पास कंप्लीट होता था, सर्किट कंप्लीट होता था, वैसे बल्ब क्या करता था? ग्लो करता था. Similarly, यहाँ पे भी यही बात है. They are saying as soon as you are going to tap at this place, this polyester layer is going to merge with this place, the glass layer. जैसे ये दोनों layers आपस में मिलेंगी, a circuit is going to be complete, and once the circuit is going to be completed, the onboard microprocessor is going to determine where have you pressed or where have you tapped. Last वाला point तीनों का same है. Coordinates मालूम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तरीका मालूम करने का अलग है. क्लियर हो रही है बात? Now there are benefits. It is relatively inexpensive technology. Okay, now it's cheap. It is possible to use bare fingers, glove fingers, stylus to carry out an input operation. Okay, good enough. Drawback: screen visibility is poor in strong sunlight. नहीं देख सकते इसके अंदर. It doesn't permit multi-touch capability. Gaming तो हो ही नहीं सकती इसके अंदर. Multi-touch. The screen durability is only fair. It is vulnerable to scratches and the screen wears out through time. आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ खुद ब खुद खराब होना शुरू हो जाता है. Now who's gonna tell me which of the touch screen are we using in our daily life cell phones? Capacitive, resistive, or infrared? Capacitive. कभी ऐसा हुआ गर्म होने से नहीं चलता? नहीं हुआ ना? We are using capacitive touch screens. Now coming towards the sensors. Sensors को पढ़ने के लिए, okay, now capacitive. Good. Now for the sensors, write these 5 points. These 5 points are that much beneficial or that much important कि कोई भी आपके पास सवाल आ जाता है sensor से related, you need to write these 5 points.
Okay, so these 5 points, have you all written that? लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं. बेटा, actuator the motor will perform accordingly. Done delay guys? Nothing लिख put it on. Okay, now can you guys just give me a minute please? Okay, so the entire sensors are working on these 5 steps. You can see that I have written 4 steps in continuity. For the 5th step, I have given 2 different headings. One for the monitoring and another one is for the control. तुम लोगों को तो पहले से पता होगा monitoring and control का. ठीक है. Now coming towards the first step, data is input और values are taken. किसी भी तरह लिख लो जो भी आपका value है, जो भी data है वो आपका input होगा. Then that data is basically converted into digital format. Why is that converted to digital format? Because microprocessor can only understand the digital data. Now that is converted into a digital format by ADC. That's an analog to digital converter if required. Okay. Why do I put it over here if required? The reason is that अगर आपका data analog format के अंदर है, then you need to convert that into digital format. अगर वो आया ही digital format में, then you do not need to convert it. Okay. Then values are compared to the stored values in the microprocessor. After that, again the values are converted back into the analog format by the DAC, that's a digital to analog converter, if required. Now always remember that when it comes to the sensors, so sensors are having 2 types, or you may say 2 different phases. One is for the monitoring and another one is for the control. Monitoring is something that it is just going to monitor out कि आपके पास system के अंदर क्या हो रहा है, and control is something that it is going to control the things कि आपके पास क्या control हो रहा है. Like for example, if I'm going to take up a scenario that there are alarm systems or fire alarm systems in a building, और अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है बिल्डिंग का, लाइक फॉर एग्जांपल द पर्टिकुलर टेम्परेचर वाज अराउंड 36 or 37 degrees and it is now 38 degrees. So if the alarm is only going to burst or the lights are going to start flashing, okay, so this will be known as the monitoring. मॉनिटरिंग हो रही है और वो कुछ नहीं कर रहा, टेम्परेचर कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है. बट इफ टेम्परेचर exceeds out the limit और आपके पास क्या हुआ, शावर्स ऑन हो जाते हैं टू कूल डाउन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको कम करने के लिए, टू लोअर डाउन दैट टेम्परेचर, सो दैट विल बी नोन एज द कंट्रोल सिस्टम. बिकॉज जैसे ही वो कूल डाउन हो जाएगी वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होंगे, शावर्स क्लोज हो जाएंगे. लेकिन जब अलार्म बज होंगे तो until unless the person is not going to close that alarm manually, जब तक आपके पास वो क्लोज नहीं हो. Is that clear? Yes or no? Good enough. Now sensors, इसको go through कर लीजिएगा, इसके अंदर पूरे के अंदर यही बात लिखी हुई थी. Now there are few types of the sensors that we are going to study. Number 1, temperature sensor. Now what they are used for? Temperature sensor अभी जिसकी हमने बात की, that they are going to control the central heating system, control monitor. Now you guys know what's the difference between the control and the monitor, okay? Control monitor, chemical process. Control monitor, the temperature in a greenhouse. Now for the moisture or the humidity sensor, control monitor the moisture levels in a soil. In a greenhouse, control monitor the humidity levels in the air in a greenhouse. Monitor temperature levels in an industrial application. Example, monitor moisture in a paint spray booth in a car factory. Whatever the paint you are going to do on a car, they are going to monitor that as well. Light sensors, you can easily find that out on your street lights nowadays. आज के अंदर ये बहुत common चीज है.
आपके पास हर स्ट्रीट लाइट के ऊपर, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द हाईवेज, तो हाईवेज के ऊपर कोई इतना बारिश नहीं है, रोजाना यहाँ से कराची से हैदराबाद तक स्विच बंद करता हुआ जाएगा जब तक शाम हो जाएगी. So obviously they have planted the solar systems over there. Switch street lights on at night and off during the day. Monitor control the light levels in a greenhouse. Automatically switch on a car's headlight when it gets dark. Okay, the last part I personally haven't seen that particular part till now. जब मैंने तुम लोगों को पहले पढ़ाया था मैंने तब भी यही बात कही थी मैंने, लेकिन 2 साल में फिर से नहीं देखी ऐसी कोई चीज. अगर आप में से किसी ने देखी है तो well, infrared or the motion sensors, turn on the windscreen wipers on a car automatically. This is something I haven't seen as well. ठीक है, अगर आपने देखी है तो that's good. Detect intruders in a burglar alarm system. अगर कोई भी आपका कोई ऐसा मोशन हो रहा है, कोई भी आपके पास इंफ्रारेड क्रॉस हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, that will be an intruder as well. Count people entering leaving a building. This is mainly done on the एयरपोर्ट्स या आपके पास कोई ऐसी जगह के ऊपर लगाया जाता है जहाँ पे आपका मल्टीपल मॉल्स के अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है, हॉस्पिटल्स में इंप्लीमेंट हो सकता है. प्रेशर सेंसर्स डिटेक्ट इंट्रोड्यूस इन अ burglar alarm system. weigh things, weight मतलब आपका वेट ले रहा है उसका, ठीक है. monitor control the process where gas pressure is important. Like for example there are few kinds of the, for example fish tanks. फिश टैंक के अंदर आपके पास ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करने के लिए आप क्या चीज यूज कर रहे होते हैं, प्रेशर कितना आ रहा है. So you guys are utilizing the pressure sensor over it. Acoustic or the sound sensor picks up the noise level. Example, footsteps in the burglar alarm system, detects the noise of the liquid dripping in a pipe. ये आपका ज़्यादा chemical process के अंदर इस्तेमाल होता है, chemical factories में इस्तेमाल होता है. Gas, example O2 और CO2, जो मैं अभी बात कर रहा था. अब गैस अगर है कि कितना है गैस और कितनी नहीं है, that will be judged by the gas sensors. Pressure कितना है उसका, that will be judged by the pressure sensors. Okay. pH determines the acidity or alkalinity levels of the soil. Okay. Pollution environment monitoring in the rivers as well. बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है इसकी. pH आपको ज्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि आपने कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है, उसका pH लेवल क्या है उस जगह का, that is used. Magnetic field sensors applied in the ABS anti-lock braking systems में आपके पास अप्लाई हो रहा है. इसके अलावा any application में detection of the changes in a magnetic field is required. Example in cell phones, CD players. Magnetic आपका waves बनना शुरू हो जाती है springs के ऊपर. If you are going to place a speaker just close to your screens, तो आपके magnetic waves create होनी शुरू होती है. करके देखना, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करना, खराब हो जाती है. सही है. Now, this was something that we were studying right now. Those 5 steps. Sensors send signals to the microprocessor computer. Okay. The signals are converted to digital if necessary using an analog to digital converter. We just studied this right now. The computer microprocessor analyzes the data received by checking it against the stored values. Okay, we discussed this as well. Now, the left part is basically of the monitoring part, and the right part is of the control part. If new data is outside the acceptable range, a warning message is sent to a screen or an alarm is activated. The microprocessor computer has no effect on what is being monitored. It's simply watching the process. सिर्फ अलार्म बस करेगा और कुछ नहीं करेगा, पूरी बिल्डिंग जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But when it comes to the control, if the new data is outside the acceptable range, the computer microprocessor sends signals to the control valves, motors, etc. The output from the system affects the next set of the input. क्या आपके पास आउटपुट के अंदर अगर टेम्परेचर लो हो चुका है, so obviously next set of the input क्या होगा, that automatically close the showers. अगर ज्यादा है तो अभी automatically on रहेंगे showers. Is that clear? Good enough. Examples of the monitoring include. You guys can go through this जल्दी जल्दी पढ़ लो कुछ ऐसी जो समझ में आ जाए. क्या मेरा अच्छा? जो पहले से हो गया, मैंने बताया 35 आपके पास पहले से स्टोर्ड है, उससे ज्यादा हो गया तो एक आइडियल टेम्परेचर आप रखते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन टेम्परेचर क्या है, 97.6 या 97.8 होता है. तो अगर इससे ज्यादा होता है, जिसे इसको फीवर हुआ है, तो क्या होता है उसका थर्मामीटर क्या है, टेम्परेचर सेंसर है, आपका टेम्परेचर मेजर कर रहा है. अगर ज्यादा होता है तो हम आपको कोई मेडिसिन या कोई भी चीज जो भी हमारा प्रोसीजर है वो करते हैं. कम होता है तो उसका मतलब हम बिरयानी का इंतजाम करते हैं, टेम्परेचर का आया है, ठीक है. एंड इफ इट्स गुड इनफ तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, दुआ करते हैं कि अब आपको अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाए, और अगर कोई दुश्मनी होती है तो बोलते हैं आप अल्लाह जल्दी से आप लोग साइड पे आ जाओ, ठीक है. Now go through the monitoring and the control part.
कोई इशू इसमें? चोर, डाकू, चोर, कोई ऐसा बंदा जो आपको बगैर बताया आ रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है आपकी। तुम्हारे घर में चोर आएगा तो ऐसे तो बेटा उसको चाय कॉफी तो पिलाओगी, ऐसा तो नहीं है ना, उसका इंट्रोड्यूस ही कहता है। इंफ्रारेड सेंसर्स क्या होते हैं आपके पास? स्पाई मूवीज के अंदर देखो रेड कलर की लाइट जा रही होती है, जैसी वो क्रॉस हो जाती है, इंट्रोड्यूसर को तो नहीं पता ना यहाँ पे रेड कलर की लाइट जा रही है, तो जैसे उसको क्रॉस करता है अलार्म बजने शुरू हो जाता है, तो इंफ्रारेड लाइट आपके पास क्या हो गई, जो है वो डिस्टर्ब हो गई। जब वो डिस्टर्ब हो गई तो ऑब्वियसली क्या हुआ, आपके पास अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी लोगों के जाने के बाद बेटा सोते वक्त ताला लगाती हो ना घर के अंदर, हर वक्त ताला लगा के रखती हो, ऐसा तो नहीं है ना, ये जब घर से कहीं बाहर जाती हो तो अच्छी तरह लॉक करती हो, या घर के अंदर होती हो तो सारे सब चीजें लॉक करके बैठती हो घर में, ऐसा तो नहीं है ना। एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल प्लीज। एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल प्लीज। अर्ली गुड इनफ। Monitoring application, burglar alarm system. Now they have applied three types of the sensors over here: acoustic sensor, that is also known as a sound sensor, then it's an infrared sensor, and then the last one is the pressure sensor. Then there is the interface over here, then the computer or the microprocessor, and इसके अंदर दोनों लगे हुए, sirens भी लगे हुए and lights भी लगी हुई, that means it's a monitoring part. ठीक है? कंट्रोल क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डोर्स क्लोज हो जाते हैं या आपका ऑटोमेटिकली पुलिस लाइंस के ऊपर कॉल चली जाती है, दैट वाज समथिंग कंट्रोल। यहाँ पे सिर्फ अलार्म बज रहा है। Now, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। A burglar alarm monitoring system will carry out the following actions. The system is activated by keying in a password or on a keypad, जो भी आपके पास उसको एक्टिवेट करने के लिए आपने कीपैड पासवर्ड डाला हुआ वो आप डालेंगे। The infrared sensor picks up the movement of the intruder in the building, कोई भी unusual movement होगी वो। Acoustic or sound sensor picks up the sound such as the footsteps, the breaking of the glass, क्योंकि हर बंदे का चलने का अंदाज अलग होता है, उसके फुटस्टेप्स अलग होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, सो आई डू स्ट्राइक द हील्स व्हेन आई वॉक, मैं हील स्ट्राइक करके चलता हूं। औरतों वाली हील की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके जूतों का जो पिछला पार्ट होता है वो आपके पास हील्स कहलाती है, ठीक है। The pressure sensor picks up the weight of an intruder coming through a door or through a window. Now, for example, if it's a place, Mission Impossible कितने बच्चों में देखी है? Mission Impossible 2. वेरी गुड, आज जाके देखना, इट्स असाइनमेंट फॉर यू गाइस। तो देख लेना ना, उन्होंने नहीं देखी, सही है, ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि वहां पे एक सिक्योर रूम था, उसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा आ सकता था, उसका टेम्परेचर भी उस रूम के अंदर लॉक था, उससे ज्यादा का टेम्परेचर हो जाएगा उस रूम का, दैट मींस कि यहाँ पे कोई इंट्रूडर है, या अगर उससे ज्यादा वेट आपके पास ग्राउंड के ऊपर आ गया तब भी आपके पास अलार्म बज हो जाएगी, कोई इंट्रूडर आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अफान वेट, तुमसे तुम्हारे पूछूंगा बेटा। फॉर एग्जांपल अफान का वेट आपके पास 50 है और हारिस का वेट 60 है, ठीक है, सही है ना, थोड़ा बोलू है, सो मैं भी 60 होगा यार, 60 बोल तो मेरा है। तो अब अफान ने अपने हिसाब से रूम को लॉक कर दिया, दैट नॉट मोर देन 50, ये चलो अफान ने जो है वो रख दिया कि एक रेंज रख ली, 52 तक भी जा सकता है, 52 तक इसने बोला 52 जा सकता है, उसने बोला मैंने खा लिया पी लिया तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर जाओ। अब जब हारिस आ गया, उसका वेट क्या था, 60 था, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ फ्लोर के ऊपर, प्रेशर सेंसर ने आपका वेट जो है वो कैप्चर कर लिया। The sensor data is passed through the ADC if it is an analog form to produce a digital data. The computer microprocessor will sample the digital data coming from these sensors at a given frequency, example every 5 seconds. फ्रीक्वेंसी का मतलब आपके पास कितनी कितनी देर के अंदर डाटा को इनपुट करेगा, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा देर तक डाटा को नहीं रोक सकते, यू नीड टू टेक इट क्विक, रीजन क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आधे आधे घंटे का डिले रख दिया तो इतनी देर के अंदर तो कार्रवाई हो चुकी होगी, सही है। तो विद्यार्थी तो जो भी इंटरव्यू वो रहने तो आया नहीं है, तो वो जल्दी आके जल्दी जाना पसंद करेगा। The data is compared with the stored values by the computer microprocessor. If any of the incoming data values are outside the acceptable range, then the computer sends signals to a siren to sound the alarm or a light start flashing. A DSE is used to device
is used if the device needs analog values to operate them. The alarm continues to sound, lights continue to flash until the system is reset to the password. यानी मैनुअली जब तक आप नहीं करेंगे जब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा. Is that clear? So that's all for today. Thank you so much, guys. Allah Hafiz.